In this lecture, we will discuss about the second phylum of invertebrates, that is phylum Cnidaria. So, learning objectives are phylum Cnidaria, characteristics of cnidarians and examples of cnidarians. Phylum Cnidaria is named because of the presence of special cells called cnidocytes. So, Cnidaria word is derived from cnidocytes. Cnidocytes are cells that give rise to special type of cells called nematocytes. Nematocytes are stinging cells. That is why phylum Cnidaria includes stinging celled organisms. And because of the presence of cnidocytes, they are called cnidarians. They are also called coelentrates. As we have discussed the reason of their naming, now we will discuss about their characteristics. The first characteristic is their symmetry. Radial symmetry is basically a symmetry in which the organism can be divided into two equal parts at any plane. Suppose we have an organism like this, so we can divide it into two equal parts in different planes. If we cut this into this plane, it will be divided into two equal parts. If we cut this side, it will be divided into two equal parts. इस साइड में इसको कट करें तो भी ये दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड होगी और इस तरह की सिमेट्री को रेडियल सिमेट्री कहा जाता है. Therefore Cnidarians have radial kind of symmetry. जबकि जो फाइलम पोरिफेरा था that was asymmetrical. Next property is body layers. According to the body layers, the organisms included in phylum Cnidaria are diploblastic. On the basis of body layers, there are two kinds of organisms, diploblastic and triploblastic. In case of diploblastic, there are two major body layers present in the body of organism, while in case of triploblastic, there are three major layers present in the organism. So, in case of cnidarians, they are diploblastic. Diplo means two, blastic is for layers. So they have two body layers. Now इन दो बॉडी लेयर्स में से एक लेयर आउटर है and the other layer is inner layer. Outer layer is called ectoderm. Derm for layer, ecto means outside, and the other is endoderm. Endo means inside and derm means the layer that is present inside the body, and between these two layers there is a jelly like mesoglea. Next property is body cavity. They have a single body cavity that acts as body cavity as well as gastrovascular cavity, means a digestive cavity. इसके दो फंक्शन है, मेन बॉडी कैविटी भी है ये and also a gastrovascular cavity. It is also called anterone. ये पॉइंट जो है वो MCQs के लिए इम्पोर्टेंट है. Now we will discuss about the habitat. All coelentrates or cnidarians have aquatic type of habitat. और aquatic होने के साथ साथ they are, some of them are fresh water while some of them inhabit in marine water. Next property is nutrition. तो इनकी न्यूट्रिशन जो है वो स्मॉल एनिमल्स है और वो एनिमल्स जो है वो स्मॉल एनिमल, स्मॉल प्रोटिस्ट्स एक्सेट्रा, ये उनको इंट्रैप करते हैं विद द हेल्प ऑफ टेंटेकल्स दैट आर प्रेजेंट अराउंड देयर माउथ कैविटी एंड टेंटेकल्स के ऊपर जो है वो स्टिंगिंग सेल्स मौजूद होते हैं. उन स्टिंगिंग सेल्स की मदद से पहले प्रे को पैरालाइज किया जाता है एंड देन इट इज डायरेक्टेड इनटू द माउथ वेयर इट इज डाइजेस्टेड. सो दे आर कार्निवोर्स. दे फीड अपॉन स्मॉल ऑर्गेनिजम्स. और जो ऑर्गेनिजम्स जो है वो इनके पास आते हैं क्योंकि जो इनके पास टेंटेकल्स होते हैं, व्हेन दे मूव इनटू द water currents are produced and with the movement of the water currents small organisms including animals and protists move with the water currents और इसकी मदद से इनके करीब आते हैं, फिर स्टिंगिंग सेल्स उनको पैरालाइज करके डाइजेस्ट किया जाता है. Feed upon small organisms immobilized by nematocysts, then directed into digestive cavity. Then digestion occurs there, and the materials or nutrients that are acquired with the help of digestion are distributed throughout the body by diffusion.
Let's have a view on the structure of stinging cells. So here is an organism, Cnidarian, that is called Hydra. और यू कैन सी दैट इसका ये इसका माउथ कैविटी है और इसके इर्द गिर्द यहाँ पे ये सारे टेंटेकल्स मौजूद हैं. दीज टेंटेकल्स जो हैं वो इनके ऊपर कुछ सेल्स जो हैं वो यहाँ पे मौजूद होते हैं. उन सेल्स को स्टिंगिंग सेल्स कहा जाता है और दे आर आल्सो कॉल्ड नेमेटोसिस्ट्स. सो दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ अ नीडोसाइट. ये एक नीडोसाइट है और इसमें ये नेमेटोसिस्ट है. सो ये इसका न्यूक्लियस है. ये कॉइल्ड थ्रेड है एंड दिस इज a नेमेटोसिस्ट. और जब भी इसके पास स्प्रे आएगा यहाँ से नेमेटोसिस ये वाला ये कॉइल जो है वो अनकॉइल होगी और जो स्टिंगिंग स्ट्रक्चर है ये वाला पिन लाइक स्ट्रक्चर स्टिंगिंग स्ट्रक्चर ये यहाँ से बाहर मूव करेगा और जो भी वहाँ पे प्रे होगा उसमें इमेजिनेट कर जाएगा जिसकी वजह से वो प्रे यहाँ पे एक पॉइजनस मटेरियल रिलीज किया जाएगा जिसकी वजह से प्रे पैरालाइज हो जाएगा और फिर उसको जो है वो आगे मूव किया जाएगा डायरेक्ट किया जाएगा डाइजेस्टिव कैविटी में और वहाँ उसकी डाइजेशन हो जाएगी. सो इनकी कार्निवोरस नेचर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है अमंग ऑल अदर फाइला ऑफ किंगडम एनिमेलिया. लोकोमोशन इसमें वैरायटी ऑफ ऑर्गेनिज्म जो है वो पाए जाते हैं. कुछ लोकोमोटरी मूड नहीं रखते हैं मींस दे आर सिसाइल सम आर मोटाइल सम फॉर्म कॉलोनीज एंड सम फॉर्म व्हाइल सम रिमेन्स इन सॉलिटरी इन्वायरमेंट. सो फर्स्ट ऑफ ऑल और इन सिसाइल में एग्जांपल आती है हाइड्रा की. हाइड्रा Obelia, sea anemone and corals that are also called madrepora. So ये सब सिसाइल होते हैं. कुछ जो है वो इनमें मोटाइल भी हैं like we have jellyfish, some form colonies, Physalia, Valella. Both these organisms form colonies while some remain separate as a single organism. Some live as solitary individuals like Hydra, jellyfish, anemone. Next property is their skeletal system. Before that, we will discuss about the different organ systems. So digestive system, they have digestive system. In kingdom Animalia, there are two types of digestive system, sac-like digestive system and tube-like digestive system. Sac-like में एक ही opening होती है और वही माउथ है एंड वही जो है वो एनस है मींस वही ओपनिंग यूज होती है फॉर द टू इंटर द फूड एंड टू लीव द वेस्ट मटेरियल. While in tube-like system there are two openings. One opening act as mouth and the other opening act as anus. So they have sac-like digestive system. One opening and that opening act as mouth as well as anus. Excretory system जो है वो इनमें absent है. They don't have excretory system. Excretion takes place by डिफियन. जो भी एक्स्ट्रा नाइट्रोजनस वेस्ट होते हैं उनको डिफियन के थ्रू बॉडी से बाहर निकाल दिया जाता है. नर्वस सिस्टम दे डोंट हैव वेल डेवलप्ड नर्वस सिस्टम बट a diffused type of nervous system. According to evolutionary point of view, there are two types of nervous system: diffuse nervous system and centralized nervous system. So in diffuse nervous system, the nerve cells are organized into tissues, but there is no a central nervous system like including brain and spinal cord that is present in other organisms of the kingdom Animalia. They have diffused nervous system. इसको हम थोड़ा डिटेल में स्टडी करेंगे. रेस्पिरेटरी सिस्टम एब्सेंट है. गैसियस एक्सचेंज जो है वो इनमें होती है बाय डिफ्यूजन. सर्कुलेटरी सिस्टम एब्सेंट. स्केलेटल सिस्टम प्रेजेंट है. दे हैव एक्सोस्केलेटन. Exoskeleton made up of calcium carbonate. This calcium carbonate is basically secreted by the epidermal cells that take lime from sea water. Exoskeleton made up of calcium carbonate. Exoskeleton बनाता कौन है? Epidermal cells. And these epidermal cells ये क्या करते हैं? They take lime. Which is lime? Lime is calcium oxide from sea water. और उस कैल्शियम ऑक्साइड को कन्वर्ट किया जाता है कैल्शियम कार्बोनेट में और एक्सोस्केलेटन की फॉर्मेशन की जाती है. दिस एक्सोस्केलेटन एक्ट्स एज स्केलेटल सिस्टम एंड रिस्पॉन्सिबल फॉर द फॉर्मेशन ऑफ स्मॉल कोरल आइलैंड्स और large coral reefs. The last system is defense system. They have defense system in the form of tentacles. They bear tentacles or tentacles have stinging cells called nematocysts, and these cells act as
organs of defense and offense. Now there exists a very specific property in case of cnidarians, that is called polymorphism. Polymorphism is a phenomenon in which an organism acquires different shapes during its development and growth. Poly means many, morphs means shapes. In case of cnidarians, there are two different types of shapes that are present during the life cycle of an organism. First one is polyp, second one is medusa. Polyp is cylindrical shape, while medusa is umbrella shape. Polyp is nutritive in function. इसका ज़्यादातर कंसर्न खाने से होता है, मेन न्यूट्रिशन से होता है. वाइल इन केस ऑफ मेड्यूसा, मेड्यूसा जो है वो ज़्यादा एडल्ट फॉर्म है और पॉलिप से मेड्यूसा बनते हुए इसके कुछ ऑर्गन्स जो हैं वो डेवलप हो जाते हैं, लाइक रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स जो हैं वो इनमें डेवलप हो जाते हैं दैट हेल्प इन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन. दैट इज़ वाई दे आर involved in sexual reproduction. They are motile and most of the medusa forms are sessile. They are called gastrozoid, while they are called gonozoids. Gastrozoids इनको इसलिए कहा गया है because they are nutritive in function. गैस्ट्रोवेस्कुलर कैविटी होती है इनमें, वैसे तो इनमें भी होती है बट मेजरली जो इनमें इनका काम है वो गैस्ट्रोवेस्कुलर कैविटी से रिलेटेड है, देयरफॉर दे आर कॉल्ड गैस्ट्रोजाइड्स. एंड इनका जो फंक्शन है वो गोनेड्स से रिलेटेड है बिकॉज दे आर इन्वॉल्व्ड इन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, देयरफॉर दे आर कॉल्ड गोनोजॉइड्स बिकॉज दे हैव gonads. This property is also called metagenesis. Here is the polyp and medusa form. This is the polyp form. में जो टेंटिकल्स होते हैं ये अपर साइड पे होते हैं, while in medusa form as it is displaying shape of umbrella, टेंटिकल्स जो हैं वो बॉडी के नीचे वाली साइड पे हैं. So this is the medusa shape and that is the polyp shape. Another property of cnidarians is reproduction. So like poriferans, they also perform both type of reproduction, sexual as well as asexual reproduction. In cnidarians, asexual type of reproduction is budding, similarly as in poriferans. While in case of sexual reproduction, there is alternation of generation. Alternation of generation is basically kind of sexual reproduction in which two generations are present and both generations are produced by each other. Means basically in case of cnidarians there are two generations including gonozoid and gastrozoid. दो generations हैं gonozoid, gastrozoid. तो बेसिकली अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन में क्या होता है, गोनोजाइड प्रोड्यूसेस गैस्ट्रोजाइड एंड गैस्ट्रोजाइड प्रोड्यूसेस गोनोजाइड. सो ये साइकिल जो है वो चलता जाता है एंड दैट साइकिल इज कॉल्ड अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन. दे ऑल्सो परफॉर्म जॉइड्स फॉर्मेशन, जैसा कि यहाँ पे दो तरह के जॉइड्स है इंक्लूडिंग, इनको हम ऊपर डिस्कस कर चुके हैं, व्हाट आर गैस्ट्रोजाइड्स एंड व्हाट आर गोनोजाइड्स. बेसिकली गैस्ट्रोजाइड से गोनोजाइड्स की फॉर्मेशन ये एसेक्सुअल मेथड से होती है. एज यू नो दैट दे डोंट हैव गोनेड्स, गोनेड्स नहीं होते गैस्ट्रोजाइड्स के पास, देयरफॉर दे आर कन्वर्टेड इनटू गोनोजाइड्स विद द हेल्प ऑफ एसेक्सुअल मेथड. व्हाइल गोनोजाइड्स में क्योंकि गोनेड्स जो हैं वो डेवलप हो चुके होते हैं, दैट इज व्हाई गोनोजाइड्स जो है वो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के थ्रू गैस्ट्रोजाइड्स प्रोड्यूस करते हैं. एट द एंड वी विल डिस्कस अबाउट द एग्जांपल्स. First example is Hydra. Hydra की characteristics क्या है? It is sessile. It is a freshwater coelenterate. Exist only in polyp form. सिर्फ polyp form इसकी exist करती है. Therefore, alternation of generation is absent. It exists as solitary individual. Second example is Obelia. It is a marine coelenterate. फॉर्म colonies. इसमें दोनों जो है वो फॉर्म्स होती हैं, बोथ पोलिप एंड मेड्यूसा फॉर्म आर प्रेजेंट. बोथ पोलिप एंड मेड्यूसा फॉर्म आर प्रेजेंट, देयरफॉर दे हैव अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन. देन वी हैव ओरेलिया. इट इज आल्सो कॉल्ड जेलीफिश. सो ये एमसीक्यूज आ सकते हैं, व्हाट इज द बायोलॉजिकल नेम ऑफ अ जेलीफिश.
तो इसको याद रखना है। पोलिप फॉर्म इसमें रिड्यूस होती है, जबकि मेड्यूसा फॉर्म इसमें डोमिनेंट होती है। इसके बारे में कुछ और पॉइंट्स हैं। इसकी बॉडी में 99% वाटर होता है। बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ 99% वाटर, it gives transparency. It gives transparent appearance. Then we have actinia. Actinia is the biological name of sea anemone. Exists in polyp form only. In sea anemone, the body is divided into large partitions, and that partitions are called mesenteries. So this is also important for MCQs. Next we have madrepora, that are also called corals. इनको कोरल्स इसलिए कहा जाता है क्योंकि इनमें जो है वो हार्ड एक्सोस्केलेटन मौजूद होता है कैल्शियम कार्बोनेट का, दैट इज व्हाई दे हेल्प इन द फॉर्मेशन ऑफ small islands and large coral reefs, therefore they are called corals. The pictures of organisms included in phylum Cnidaria. This is jellyfish and scientific name is Aurelia. This is sea anemone. This is Obelia, madrepora, and this is microscopic hydra. Now we will discuss about coral reefs. Corals are stony masses formed by the secretion of specialized polyps. It means that corals जो है वो specialized polyps secretions produce करते हैं, वो secretions hardened होके stony masses create करते हैं, and that stony masses are called corals, and when corals combine together they form coral reefs. These secretions that are produced by these specialized polyps are hardened and thus cover the polyps by forming stony cups. It means that जो polyp ये secretions produce करती है वो polyp under the surface जो है वो बरी हो जाती है और उसके ऊपर stony network of cups जो है वो cover कर लेता है उसको वगैरह को, because polyps are nutritive in their function. जब भी पॉलिप्स को लिविंग पॉलिप्स को न्यूट्रिशन की जरूरत होगी, दे कैन पास आउट देयर टेंटिकल्स थ्रू द माउथ ऑफ द स्टोनी कप्स फॉर फीडिंग. तो वो अपने टेंटिकल्स, जिनके थ्रू टेंटिकल्स आर बेसिकली द स्ट्रक्चर्स ऑफ नाइटेरियंस दैट हेल्प देम टू कैप्चर देयर प्रे. सो वो क्या करेंगे, उस स्टोनी कप के माउथ से अपने टेंटेकल्स को विथड्रॉ कर सकते हैं, बाहर मूव कर सकते हैं और इससे वो फीड जो भी उनका न्यूट्रिशनल मटेरियल होगा उसको मूव करेंगे और उस पर फीड करेंगे. Such coelentrates that form coral reefs are mostly colonial. ऐसे coelentrates जो coral reefs की formation करते हैं that have colonial type of organization. In corals, there is a deposition of calcium carbonate that is also called limestone. और calcium carbonate की deposition की वजह से corals are hard in nature. They are hard, rigid. Importance of corals. तो corals जो है वो sea life के लिए बहुत ज़्यादा important है because due to their massive structure, they serve as a living place for a variety of sea life. ये habitat provide करते हैं, living place provide करते हैं to many sea lives. They are found in the coastal waters of Florida, West Indies, east coast of Africa, Australia, and island of Coral Sea. You can see that coral reefs कितने ज़्यादा diverse form में दुनिया के मुख्तलिफ हिस्सों में मौजूद हैं. Here are different kinds of coral reefs. You can see that here is a stony network of secretions produced by the polyps, and inside this stony network there lie individual polyps. You can see that it provides space for many living species in the sea. So this was all about corals.